Bismillah. All right. So in today's lesson, the first thing we'll do is discuss what are the causes of a current account deficit. So a quick recap. बाद में. So पहली चीज, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट क्या होता है यार? महानिया कल किया था, तुम थी कल की क्लास में, है? ओ अच्छा, टेस्ट था. अब ये सो करंट अकाउंट हैज 4 कंपोनेंट्स. ठीक है, ट्रेड इन गुड्स प्लस ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम. मैं दोबारा नहीं कर रहा. आज जो मैं यूट्यूब अपलोड करूंगा ट्यूटोरियल, वो देख लेना एक बार. ठीक है, बस याद रखो, करंट अकाउंट इज सिंपली एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर प्लस सम इनकम्स एंड करंट ट्रांसफर्स. तो वो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम देखो. अच्छा, नाउ what are some of the causes of current account deficit? पहली बात, what is a current account deficit? When the export revenue is less than the import expenditure. When inflow of money in the current account is less than outflow of money in the current account of the balance of payments. ठीक है, so this is what a current account deficit is. Now what are the causes of a current account deficit? There are 4 causes of a current account deficit that any country can face. The first 2 are not very problematic. They are short run causes which can be solved on their own. But the next 2, this and this, these are long term issues. And these problems are faced by developing countries, which is why they are problematic. Because ये खुद ब खुद हल नहीं होंगे. Right? So let's discuss these. The first cause of a current account deficit is when an economy is growing. What is meant by a growing economy, Zainab? बिल्कुल, good. जब उनका real GDP मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो, in simple words, जब लोगों की इनकम्स इंक्रीज हो रही है. So GDP बढ़ रहा है, इनकम्स बढ़ रही है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. This is a growing economy. So the next question can be, sir, how can a growing economy, मतलब growing economy is good, how can a growing economy experience a current account deficit? 2 reasons. यहाँ लिखा हूँ मैंने. Number 1, because a growing economy experiences high employment. This means people are earning higher incomes. When people are earning higher incomes, their purchasing power is rising, causing their demand for imports to increase. And when the demand for imports increases, that may lead to a current account deficit. ठीक है? This is the first major reason behind why a growing economy may cause a current account deficit. There is another reason. Because an economy is growing, that means it is producing more output. GDP बढ़ रहा है, जैसे ज़ैनब ने कहा. It is producing more output. When a country is producing more output, it needs more factors of production. वो factors of production कहाँ से आएंगे? मतलब locally भी होंगे और we'll have to import. तो as a result, the demand for imported raw materials बढ़ेगी. As a result, a country may experience a current account deficit. So there are 2 reasons why a growing economy may lead to a current account deficit. Number 1. But as I said, this is a short run problem. Why? Q. Very good. Shabash. So, a growing economy will be producing a lot of output. And there will come a point in time when it is able to export that high output abroad. ठीक है? And it will import less goods and services because now those goods or services are mostly available locally. And hence, a growing economy will be able to overcome this current account deficit in the future. खुद ब खुद. ठीक है? So this is a short run problem. या short run cause. Problem नहीं, cause. The second cause of a current account deficit is when there is a recession in the trading partners. पाकिस्तान का ट्रेडिंग पार्टनर कौन है?
चाइना, यूएई, ठीक है, सऊदीया भी है, अमेरिका भी है, राइट? सो व्हेन देयर इज अ रिसेशन इन चाइना, व्हाई वुड दैट लीड टू अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन पाकिस्तान? आमना, जो हम इंपोर्ट कर रहे होंगे रॉ मटेरियल्स हमारे पास उस तरह से होंगे और हमारे एक्सपोर्ट ये बेसिकली बिकॉज व्हेन there is a recession in China, that means that we won't be able to export a lot of our goods and services to China because the Chinese incomes are falling basically, ठीक है, वो गरीब हो रहे हैं, as a result their demand for imports is falling, which means our demand for exports are falling, मतलब our export demand is falling essentially, ठीक है, and that would mean that the country may experience a current account deficit because our trading partners are in a recession, या decline हो गए. But this is also a short run problem. Why? Because that recession will not last forever. As soon as the Chinese economy recovers, our current account deficit will also recover. ठीक है? Is this clear? ये तो दो causes, short run causes हैं, less problematic causes हैं. Let's move to the more problematic causes. The third cause of a current account deficit, which is experienced by most developing, not all, but most developing countries experience this, is what is known as structural problems. और उसके अंदर तीन problems हैं which add to the current account deficit of the country. What are these three? What is पहली बात, what is meant by structural problems of a country? Structural problem is when an economy or when an economy's structure is weak. ठीक है? Sir, what is meant by an economy's structure is weak? What is meant by that? By structure I mean कि जो economy की foundations है ना, they are not very conducive to high exports and low imports. Because वो economy का जो structure है और जो framework है वो इस तरह है कि हमारे goods demand में ज़्यादा या कम है? कम. हमारी economy का structure ऐसा है that the demand for our goods is automatically low. Why? Because of these three issues. These three issues have been faced by Pakistan regularly over the past decade and a half. Pakistan has faced these three issues. क्या? Number one, overvalued exchange rate. मैंने शायद आपको बताया हुआ. In 2014 till 2016, Pakistan was one of the few countries in the world जिनका 3 लगातार सालों में export revenue fell and our current account deficit during that time was a lot. क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरी जा रहा था, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ी जा रहा था. बिकॉज पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को 105 रुपीज फॉर अ डॉलर पे फिक्स किया हुआ था एंड दिस वाज टू ओवरवैल्यूड. This is the first major structural problem that developing countries face. Second structural problem, high inflation. Countries like Pakistan have been going through a lot of inflation over the past few years. Since COVID and since that Russia-Ukraine war, Pakistan has experienced, and many developing countries have experienced high inflation. If there is high inflation in Pakistan, what will that do to the demand for our exports? Decrease. And what will that do to the demand for our imports? Increase. Right? And that will lead to a consistent current account deficit. क्योंकि हमारी लोकल मार्केट को बूस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल. So that will lead to a consistent current account deficit. So ये भी structural problem है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है आपके मुल्क में क्योंकि आपका स्ट्रक्चर वीक है इकोनॉमी का. Number 3, this is something Pakistan has not just experienced over the past decade or so. This is something that Pakistan has experienced since the 1990s even. Pakistan's labor productivity
is either stagnant or falling. Our labor is very unproductive. And this is the case with quite a few developing countries. ठीक है? Because हमारे labor पे काम नहीं होता इतना, our skill, training and our education is quite weak. Healthcare is also not up to the mark. As a result, our workers are very underproductive, and because there aren't many machines, there isn't very high technology in the country. As a result, because of those underproductive workers and underproductive machines, the quality of our exports is what? Low. The quality of our exports is low, number one. What about the cost of production? It is high. Because जितनी productivity कम होगी, उतनी average cost of production क्या होगी? ज़्यादा होगी. Right? These three are structural problems. And as I said, Pakistan की example है. Pakistan has been experiencing these three problems for some time now. हाँ बिल्कुल है. अपने एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग कर दें या मैनेज फ्लोट कर दें, ज़रा थोड़ा सा वैल्यू नीचे करें, जो पाकिस्तान ने किया था फिर 2017 ऑनवर्ड्स, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट्स थोड़े से बढ़े थे. इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन कैन बी ए लॉन्ग टर्म इशू, ठीक है, बट इसका भी सोल्यूशन है. पॉलिसीज गवर्नमेंट कर सकती है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट कैन यूज. कॉस्ट पुश डिमांड पुल इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए देर आर सेपरेट पॉलिसीज. विल स्टडी दैट इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है. लो फैक्टर प्रोडक्टिविटी का सोल्यूशन है. टाइम लगेगा, बट आप स्कूल्स खोलें लोगों के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स खोलें, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें, सोल्यूशंस तो है, ठीक है. सो ये हो गए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. दीज आर लॉन्ग टर्म कॉजेज एंड दे कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द कंट्री. नंबर 4, ये ट्रिकी है, जरा गौर से सुनना. दिस कॉज इज नोन एज Prebisch-Singer hypothesis. दो इकोनॉमिस्ट थे, they came up with this Prebisch-Singer hypothesis. ये क्या होता है? Prebisch-Singer hypothesis is basically these economists reached a conclusion by looking at the data of developed versus developing countries, and that conclusion was as follows. Developing countries are more focused on primary sector products. And we know that primary sector products are mostly necessities, hence their PED and YED is inelastic. While developed countries have obviously moved forward in their stage of production, and they are more involved in secondary and tertiary sector. And secondary and tertiary sector में some are necessities, some goods are necessities, but many goods are luxuries or hi-fi goods, whose YED and PED is elastic. Over the past few decades, 3-4 decades, 30-40 साल, over the past few decades, ओवरऑल इनकम्स कहकशां दुनिया में क्या हुई है? हाँ, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज ओवर द पास्ट 30-40 ईयर्स. मतलब अब इफ यू कंपेयर योर पेरेंट्स इनकम इन द 80s कंपेयर्ड, अच्छा चलो तुम तो नहीं काम करती, इफ आई वर टू कंपेयर माई पेरेंट्स इनकम, माई फादर वॉज इन द आर्मी, so yeah, even my mother was a teacher. So अगर मैं अपनी मदर के 1980s से, चलो अपने फादर की 1980 से, क्योंकि मेरी मदर ने उस वक्त पढ़ाना नहीं शुरू किया था, बट 1980 से अगर मैं अपने फादर की इनकम अपने साथ कंपेयर करूं, तो माई रियल इनकम, नॉट जस्ट नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, परचेजिंग पावर, माई रियल इनकम इज हायर देन हिज. ठीक है, बिकॉज ओवरऑल इनकम लेवल्स हैव इंक्रीज्ड. जीडीपी ग्रोथ हुई है ना पिछले 40-50 सालों में, इकोनॉमीज ग्रो की हैं, अपवर्ड ट्रेंड चला है. हाँ, वो कुछ लोग कंट्रीज का बहुत अनइवन है, बट अपवर्ड ट्रेंड चला है.
पाकिस्तान भी देखे, जितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की, कोई शक नहीं, बट पाकिस्तान का जीडीपी 40 सालों में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. So overall income levels over the past 30-40 years have increased. Overall income levels have increased. As a result, when incomes increase, तो Kehkashan, what happens to the demand for goods and services? It increases unless those are inferior goods. यहाँ पे हम inferior goods नहीं पढ़ रहे, normal goods ही हैं, ठीक है. चाहे वो टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, इवन प्राइमरी सेक्टर के ज्यादातर गुड्स नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर कम ही होते हैं, ठीक है. तो एज इनकम लेवल्स हैव इंक्रीज्ड ओवर इन डेवलप्ड, डिमांड की तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी है. सवाल कितने से बढ़ी है? अब आते हैं पहले डेवलपिंग कंट्रीज पे. बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट हैव एन इनकम एंड प्राइस इनइलास्टिक डिमांड. तो एज इनकम्स आर राइजिंग, प्राइस इलास्टिसिटी छोड़ो, इनकम इलास्टिसिटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एज इनकम्स आर राइजिंग, what is happening to the demand for exports of developing countries? It is increasing, but by a small proportion. Good. By a small proportion. Which means that export revenue might be rising in these 30-40 years. Export revenue might be rising, but that rise is not that significant. ठीक है. अच्छा, ये पहले. And because developed countries are still demand for their goods or exports, it is increasing by a large proportion, causing their exports to significantly increase. अच्छा, हम डेवलप कंट्रीज को नहीं देख रहे, हम डेवलपिंग कंट्रीज को देख रहे हैं. जो वो डेवलपिंग कंट्रीज के, देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, टर्शियरी प्रोडक्ट्स डेवलपिंग. तो अगर डेवलप कंट्रीज का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग टू द इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? इट इज इंक्रीजिंग बाय अ लार्ज प्रोपोर्शन. ये दोनों कंपेयर करो, कंपेयर दीज टू. डेवलपिंग कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड अ राइज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू. अ वेरी व्हाट आर दीज टू डूइंग टू द करंट अकाउंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? Worsening. That deficit is consistently rising. Hypothesis is, ठीक है. Prebisch-Singer hypothesis said or says that because developing countries focus on primary goods that have a widely inelastic demand, their export revenue hasn't risen a lot over the last few years. While because their imports are mostly secondary and tertiary sector products, so their imports are rising by a considerable amount, and as a result these countries are facing a consistently high current account deficit. और जब तक Prebisch-Singer hypothesis ये कहता है कि जब तक these developing countries don't change their product portfolios, this current account deficit will consistently rise in the long run. So ये Prebisch-Singer hypothesis long run cause है, short run cause है? Long run cause. These are the 4 causes of a current account deficit in different countries. These 2 are mostly for, again मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, these 2 are mostly for developing countries. The first 2 can be for any country, developing or developed. कोई भी हो सकता. Is this clear? China is an exception, by the way. China जब ग्रो कर रही थी बहुत तेजी से, तो because that growth was fueled by exports, तो as a result China's growing economy was not a cause for their current account deficit. It was a cause for their current account surplus. वो करंट अकाउंट सरप्लस को कॉज किया था उसको, क्योंकि वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी. बट हाँ, इन मोस्ट केसेस व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग तो आपका डेफिसिट होगा. बच्चे समझ आइए.
ठीक है, आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, बट आई होप दिस इज़ क्लियर। एक छोटी सी चीज़ रह गई है, बट आई डोंट थिंक वो मैं आज कर पाऊँगा आपके साथ। करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। 5-6 प्रॉब्लम्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। फिर करंट अकाउंट, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस, वो तो अच्छा होना चाहिए।